Good morning, children. How are you all? You all are good? So, children, today let's start our session with a prayer. Okay? So, children, join your hands and repeat the prayer along with me. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Very good, children. Once again repeat the prayer, children. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Very good, children. Let's start with the literacy subject, children. The last alphabet that which we have learned in our last literacy lecture was alphabet T. Now, let's proceed towards the next alphabet, that is U. Okay? First, I will show you how to write uppercase and lowercase U, and then we will see what all pages you have to practice in this book. Okay? Children, start from the top. In this way, curve towards upward. है ना? इस पैटर्न का नाम क्या है? Curve towards upward. But which alphabet is this? Uppercase, that is capital alphabet U. Okay? U for umbrella. Understood? Now let's see the lowercase letter U. Okay? For lowercase letter U, in the same way you have to draw one small curve towards upward, और इसी कर्व के यहाँ पे एंड में आपको स्टैंडिंग लाइन बनाना है. जस्ट ये कर्व के थोड़े नीचे आना चाहिए. इन दिस वे कर्व टुवर्ड्स अपवर्ड. फिर इसी एंड में आपको स्टैंडिंग लाइन इसी के ऊपर बनाना है, थोड़ा सा नीचे लाना है बस. ओके, दिस इज योर लोअर केस, दैट इज स्मॉल लेटर यू. यू फॉर umbrella. Understood? Now let's see how to practice properly on lines in your literacy skill sheet book. So children, this is your literacy skill sheet book. In this book, open to your page number 113. Okay? U for utensils. Utensils यानी कि बर्तन. U for utensils. Okay? Trace the letter with pencil and say it aloud. Trace and write. फर्स्ट लाइन पे हम अपर केस लिखेंगे, सेकेंड लाइन पे हम लोअर केस लिखेंगे. अपर केस के लिए आपको रेड लाइन से शुरू करना है, नीचे वाले बॉटम ब्लू लाइन तक टच करना है. इस तरीके से कर्व टुवर्ड्स अपवर्ड. दैट्स इट. अंडरस्टूड? इन दिस वे यू हैव टू राइट अपर केस, दैट इज कैपिटल लेटर यू. ओके, देन फॉर स्मॉल लेटर यू आपको सिर्फ ये दो ब्लू लाइन के बीच में लिखना है. कर्व टुवर्ड्स अपवर्ड, स्टैंडिंग लाइन. कर्व टुवर्ड्स अपवर्ड, स्टैंडिंग लाइन. ओके, अंडरस्टूड? इस तरीके से आपको लोअर केस स्मॉल लेटर यू ब्लू लाइन पे ही लिखना है. ओके, इन दिस वे यू विल कंप्लीट बोथ दिस लाइन. Practicing letter U. U for utensils. Then paste the stickers of the thing starting with the letter U. यहाँ पे U for umbrella, U for unicycle, U for uniform. The girl wearing the school uniform. यहाँ पे आप स्टिकर्स पेस्ट करोगे लेटर यू से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स के. फ्रॉम वेयर यू विल गेट द स्टिकर्स? फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द बुक. ओके,
So children, you can see that I have pasted the stickers of the thing starting with the letter U. U for umbrella. U for unicycle. इस तरीके का साइकिल को हम क्या बोलते हैं? यूनिसाइकिल. U for uniform. U for utensils. Okay? After this, after practicing on this page, turn to your next page. Page number 114. Okay? Over here you have to read the words starting with the letter U. Okay? So start reading. U for unicorn. U for unicorn. U for umbrella. U for umbrella. U for uniform. U for uniform. U for U pupa. U for U pupa. U for urn. U for urn. Understood? In this way you are going to read the words in page number 114. Okay? Then come to the next page. Page number 115. Write the first letter of the following in capital in pink boxes and in small in capital in blue boxes and in small in pink boxes. Okay? जो blue boxes है इसमें आपको capital U लिखना है, जो pink boxes है इसमें आपको small letter U लिखना है. Okay? I hope you all know na. So start writing. So children, you all can see that I have completed this page by writing capital letter U, capital alphabet U in blue boxes and small letter U in pink boxes. So now once again we will read the words which is given over here starting with the letter U. Okay? एक और बार हम read करते हैं. U for unicycle. Look at the joker. Yes? जोकर जो साइकिल पे बैठा है इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसाइकिल. U for uniform. The girl wearing a uniform. U for urn. U for umbrella. U for U pupa. Bird. U for unicorn. Okay? So in this way you will practice. You will write letter U in this page and then you will read the words. After this, turn to the next page. This is your page number 116. Over here, what you have to do? Yes, color the letter U. Match the things which start with letter U with it. जैसे हमने लेटर एस के लिए किया था ना, वैसे ही आपको यहाँ पे लेटर यू कलर करना है. और ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स है इनमें से जो लेटर यू से शुरू होता है उसे हमें मैच करना है. डॉट टू डॉट. ओके, वेरी गुड. नाउ स्टार्ट कलरिंग फर्स्ट. See children, in this way you have to color letter U. I have used yellow color. You can use any of your favorite color. After coloring this, look at the objects and match with the letter U that starts with letter U. Okay? U for urn. U. Right? So इसे हम match करेंगे. What is this? Tomato. ये letter U से शुरू होता है. No. So हम इसे match नहीं करेंगे. Over here the girl is wearing a uniform. But यहाँ पे हमें नाम दिया है girl. G for girl. Right? So we don't have to match this. What is this? What is there in the bowl? Soup. S for soup. ये letter S से start होता है ना? Then we will not match it. Then what is this? What is the name of this bird? U pupa. It starts with the letter U. Yes. So you will match this dot to dot. Okay? With letter U. What is this? Squirrel. It starts with the letter U. No. So you will not match. What is this? Umbrella. It starts with the letter U. Yes. So you will match this. Okay? ऐसे ही यहाँ वहाँ मैच नहीं करना है, डॉट टू डॉट मैच करना है जैसे मैंने किया है. Understood? In this way you will complete this page number 116. Okay? So children, I hope you all understood which all pages you have to practice for letter U.
Now, when you practice writing letter U, even you have to practice how to read the words. Okay? जैसे मैं ऑनलाइन सेशन में बोलती हूँ आपको, जूम सेशन में पेंसिल उस ऑब्जेक्ट पे रखना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर रीड करना है. ओके? इन द सेम वे, फर्स्ट यू विल प्रैक्टिस, then you will read the words also. Okay, children? Now take out your books and start practicing. Thank you. Bye-bye.